सो क्या हाल आप लोगों का, कैसे चल तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ पे बात करें आज हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। नहीं सर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात नहीं करें, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अप्रोचेस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. What does mean by the approach of literary criticism? It can be defined as certain forms, and how we guys are going to get each and every clear. Here you are with you guide Rahul Sharma, and here at the channel class of planning, you're going to clear this particular class where I'm going to discuss the three approaches of literary criticism. The first one we have the psychological and the feminist and socio-psychological or the Marxist view of literary criticism. What does mean by this? Sir, इसमें तो दो कंफर्म पेपर में आती है एंड व्हाई डोंट नो थर्ड वन इसके चांसेस पूरे हैं इस बार आने के. तो आपने कहा हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस. द फर्स्ट थिंग वी नीड टू क्लियर अबाउट literary criticism is that it's all about your own point of view to judge the work of someone. That is literary criticism. But while talking about the approaches, it does mean that we are following the certain approaches. Maybe the approach of Freud or the approach of certain people such as the feminist critique. Take an example of Virginia Woolf, and then come to next the Marxist, so-called socio-psychological. So here we do have the certain norms. In the beginning, we need to clear कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे समझ पाते हैं, किन चीजों को क्लियर करना है, कैसे करेंगे. लिखने के लिए एक काम करो, पेन और नोटबुक प्लीज साथ रखो, क्योंकि यहाँ आज मैं कई सारे पॉइंट बताने वाला हूँ जिनको आप लिख लेंगे. वो ये क्लास बहुत बड़ी नहीं होने वाली, इसमें मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा जिसको बहुत इजीली ग्रैब कर लेंगे और लिख भी पाएंगे. टिप्स पे क्लियर हो जाएंगे. वाइट साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. फर्स्ट, इट डील्स विद एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन किसके पहले क्लियर होता है. एक्सप्रेशन फिक्शनल कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्शनल फॉर्म. और ये फिक्शनल फॉर्म कैसे होगी, उसको कैसे करते हैं और उसमें लिखना क्या क्या है डिटेल के लिए. यस, आई एम गोइंग टू यूज माय नोट्स फॉर यू गाइस ताकि आप बहुत इजी लिख पाए. लैंग्वेज को जितना इजी कर सकते हैं उतना इजी लिखेंगे एंड वी गोइंग टू गेट द मैक्सिमम पॉइंट्स. अल्बेट आपने कहना है, मैं सिर्फ आपको ब्रीफ कराऊंगा. सो यहां से शुरू करते हैं. द फर्स्ट, psychological criticism. What is the psychological criticism? This approach deals with the work of literature. The work of literature primary as it is expression. Primary as it expression. Expression किस फॉर्म में क्लियर करते हैं. Primary as an expression. ये expression क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर कर पाएंगे. In fictional form, I repeat, of the author's personality. Here you need to clear the author's personality. And when somebody is talking about the author's personality, you need to clear the certain points. Say author personality में क्या करता है. The first we are having the mindset, his mindset. पहला उसका mindset है. Second, his personality. You can say the personality or the mindset, really it can be. So here we are having the first thing is the personality. Then the mindset. Look, this is really important. While clearing the concept of psychological approach of literary criticism, we need to clear the first here, the mindset, the personality, feeling and desires. Yes, these are three things जो हमें ऑन्टोपोलॉजी तो तीनों के तीनों हमारे लिए काम करते हैं. तो हमने कहा इस कॉन्सेप्ट को समझना है, इसके क्या प्रोसीजर होंगे एंड हाउ गोइंग टू क्रैक ऑल दीज पॉइंट्स. तो फर्स्ट फोर यू गाइस नीड टू क्लियर दीज फोर. द फर्स्ट फोर, पर्सनालिटी, माइंडसेट, फीलिंग एंड डिजायर्स. अभी कैसे क्लियर करते हैं, इसके अगले पॉइंट को प्लीज बहुत अच्छे लिखना क्योंकि ये मैटर करता है आपके लिए बहुत ज्यादा. हियर it also requires that we investigate the psychological of the character and their motives in order to figure out the work's meaning. हमेशा करना, हर आदमी का अपना एक पॉइंट होता है किसी के काम को जज करने का, और जब वो जज कर रहा है तो उसका दिमाग उस वक्त क्या है, उस वक्त उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है किसी के काम को जज करते हुए. टेक एन एग्जाम्पल, बहुत अच्छे क्लियर करते हैं. कई बार पेपर बहुत अच्छा लेके आता हूँ, नंबर बहुत अच्छे नहीं आते. हमारे दिमाग, टीचर का दिमाग खराब होगा सीरियसली, उस वक्त शायद कुछ गड़बड़ होगी. यू आर टू टीचर, डेफिनेटली आप भी टीचर में पढ़ा रहे होंगे किसी को, चेक कर देखो. कई बार आपका मूड बहुत खराब होता है और आप पेपर को चेक कर लेते हो, उस वक्त आपका माइंडसेट क्या होता है, वो पेपर की चेकिंग का क्या रिजल्ट आता है आप भी जानते हैं. जब बहुत अच्छे मूड होते हैं, एट द टाइम यू आर चेकिंग सम पेपर, तो पेपर में रिजल्ट क्या आता है,
Just try and imagine this situation. This is the psychological approach of literary criticism. I hope abhi yahan clear hua hoga. Then come to the next point. Here we are having the school of criticism got its start with the work of Sigmund Freud. Yes, the name you need to know. और इसको मेंशन करना है. फ्रॉड के नाम को मैं मेंशन करूंगा ही करूंगा because it's really very important to clear. He was the one who started this. And here, तीन concepts which incorporate the importance of conscious, unconscious, and subconscious. I repeat, the conscious, unconscious, subconscious. सर वो ईगो, इट और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट याद होगा. आपने प्लीज वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो प्लीज जाकर वीडियो को देखना. और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस. कम टू नेक्स्ट पार्ट. कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ह्यूमन बिहेवियर. सम टिपिकल आर्केटाइपिकल फ्रेडियन इंटरप्रिटेशन इंक्लूड. क्या इंक्लूड करती है इसको लिख लो यार प्लीज. ये जो बोल रहे हैं यहाँ जरूर लिखना. इट इंक्लूड्स रेबेलियन अगेंस्ट अ फादर. When a kid grows up, those who really done B.Ed और जो करने वाले आगे तो उनको काम आएगी. वहाँ साइकोलॉजिकल थ्योरी वहाँ पे है, कंफर्म आती है. तो पहला आ गया रेबेलियन अगेंस्ट फादर. सेकंड इट वर्सेस सुपर ईगो, आई मेंशन अर्लियर. डेथ विद द फोर्सेस और द सेक्सुअल रिप्रेशन. And then come to next one, dreams, visualization and fantasies of characters in modern works usually stem from Freudian concept. ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं? ये सारे के सारे आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो आपने कहा लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है, कैसे समझ पाएंगे, एंड हाउ गोइंग टू क्रैक ऑल दिस. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको क्लियर होना चाहिए. तो ये तो गया फर्स्ट पार्ट जिसको हमने बोली सर पहली अप्रोच क्लियर की, एंड दैट इज द साइकोलॉजिकल थ्योरी. नाउ कम टू द सेकंड वन. That is the feminist approach, or we can say the gender approach. What is that? So feminist का concept confirm है, पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है. We are 100% sure. What is the feminist approach of literary criticism? Where the women are being talking about their rights, their all things, those they require, those really they want, that they want equal to the men, where they have been protesting in the literary works. That shows that the women are still the member of the society and they need to have the equal rights. ये सारी बातें कहाँ आती हैं हमारे पास? फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म आते हैं. तो ये सब फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस. सो थोड़ा एडमिट कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर करते हैं ताकि हम इसको बता पाएं इसमें किन चीजों को ऐड ऑन करना है. राइट डाउन गाइस प्लीज. This approach asks us to use a wide variety of issues related to gender. Gender discrimination. Yes, we do have gender discrimination everywhere. We can find out easily in the society. But here we need to mention concerning the author, work itself, the reader and the society, or the author and the reader. And when we are talking about the author, they need to concern about these. उनको इन चीजों पे सोचना पड़ेगा. They need to think about these. And then we are having to determine the stance of the work on the feminist content. These critics would have argued in order to achieve validity that they are right, what they were saying is exactly right, and everybody been following that path. And then comes the next one, a literary criticism that claims university must include the feminist consciousness. सर इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी. यूनिवर्सिटीज को भी वुमेन कॉन्शियसनेस को पूरी तरह ऐड करना चाहिए. दे नीड टू क्लियर कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए. हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Since still very recently and in many instances, yet therefore necessarily strained the perspectives. Feminist critics look to development of male and female characters. Look to develop male and female characters and their motive to see how the author and his own times affected the gender roles in work. Means how does the work of the author impact over the role of gender in society? That is feminist criticism. Means how much the author is able to inspire or able to change the society point of view. This is the most important concept from feminist critics. अब feminist critic को डिटेल में जानने के लिए प्लीज feminist critic की वीडियो है उसको देखना ना भूलें.
नोट्स में सारे सारे मेंशन है, ये तो सिर्फ एक ब्रीफ दिया गया जहाँ पे आप अप्रोचेस को समझ पाए कि अप्रोचेस क्या है, हाउ यू गोइंग टू वर्क आउट, वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक अप्रोच बार बार आती है, मार्क्स लिस्ट अप्रोच, जिसमें कई बच्चे बोलते हैं सर प्लीज आप इस अप्रोच को डिटेल में बताओ, हमें समझना है क्या है। घबराना मत, फुल फ्लैश वीडियो भी आने वाली जल्दी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी सर सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट अप्रोच। सर सोशियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल व्हाई द सोशियोलॉजिकल वाज बीन एडेड विद द मार्क्सिस्ट, सोसाइटी बेस्ड थी, सोसाइटी में क्या चेंज आ रहे हैं, कैसे क्लियर कर पाएंगे, डेफिनेटली है इसमें। here we are the first point. This viewpoint consider particular aspects of the political content of the test. So political content, what is the political content, how the political issues being raised and how they've been resolved. So the author, the historical and the social culture context of work, the cultural, political and personal situation of the reader in relationship to the test. So here we need to clear that the writer or the author is trying to convey the message through his own personal experiences in the test. Then these critics tend to focus on overall themes of work as related to economic. सर यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, economic, class, race. First you need to clear these: economy, class and race. Why they been raising the issues with this? Because it's Marxist approach. So here the first thing I repeat, the critics tend to focus on overall themes of work as related to the class, race, I repeat, economy, sex. And what is their impact? So the last and the instance of operation of the liberation. Liberation. What is liberation? Free of thought, the freedom of the thought, that you're being liberated. You are being defining what you really want. Author, critic, reader, biases explored. So we can say the three approaches. Sorry, तीनों approaches कैसे काम करते हैं, किन कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो ये तो सिर्फ ग्लिम्स था गाइस, बाकी कहानी बड़ी लंबी है, बाकी भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। टिल देन यू नीड टू नो कि क्या करना है, क्या लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and keep sharing the videos with other people, and don't forget to like the videos guys.